आप अपने आप पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो बिकॉज वी डोंट हैव टाइम बिकॉज ऑफ द लाइव्स दैट वी आर लिविंग इन. What are the type of thoughts that you have? Do you feel fulfilled? Do you feel like, I've achieved everything? We are easily able to connect with anybody who we want. Like suddenly I keep questioning myself, make it work the way you want to make it work. Everything in this universe is energy. Hey guys, welcome to the episode 9 of the podcast Beyond the Peel, your journey to self transformation. Today I'm going to talk about 5 most common limiting beliefs that most of the people have and how you could overcome those. So, if you don't know what limiting beliefs are, I have spoken about what limiting beliefs are in detail in my previous video. I'm going to link that above and in the description below as well. It's very important for you to know what limiting beliefs that you hold on, because these are the ones which are basically hindering your growth to wherever you want to reach. This podcast is all about self transformation. It's about personal growth. Limiting beliefs is a roadblock that you really need to get and pluck it out of your life. So if you don't know what those are, I highly recommend checking that video out first. It will give you a really good insight into what they are, where they originate from, what is it that you can really do to overcome those. So definitely recommend checking that out. Now that we are here, for people who know what limiting beliefs are, the very first common limiting belief that most people carry is I don't have enough money. So what does that mean? Many a times हम लोग खुद ही बोलते हैं कि नहीं यार, मेरे पास तो इतना ही है, मेरी तो सैलरी इतनी कम है, मेरे पास तो हमेशा कम ही रहता है, आई कैन नॉट अफोर्ड दैट थिंग. मैकबुक तो मैं लेने का भी नहीं सोच सकती. आई बाय सम चीप लैपटॉप, आई बाय सम चीप फोन. आई डोंट हैव, आई नेवर हैव. You've got to stop. This is really exhausting. So you've got to stop there. So many people, they have it ingrained within their mind ki they are always in the scarcity position, कि हमेशा उनके पास scarcity रहती है. अगर उनके पास कभी कभी ज़्यादा पैसे होते भी हैं, even then they feel कि यार ज़्यादा हैं तो इसको मैं या तो थोड़ा सेव कर लेता हूँ, I will do XYZ. So they are always living in that scarcity mindset. What is happening because of that is that you are giving signals to your mind ki you never have enough, and then mind is never going to give you enough. So that is why it is very important for you to change that limiting belief of yourself and basically come out of that mindset and give positive signals to your mind saying ki I have enough, I can earn more, I am self-sufficient. You can say all of these things. So instead of thinking ki I never have enough, instead of sulking about it all day, instead of giving those negative signals to mind, instead of creating that atmosphere in your home कि नहीं हम तो मिडिल क्लास ही हैं, हम मिडिल क्लास ही रहेंगे. Instead of doing all of that, what you could do is say these positive affirmations. Think about how you can grow financially. Think about additional income sources. Educate yourself on what are the things that you can learn which are monetizable. There are plenty of ways you can monetize today. So people who say कि मुझे तो कुछ नहीं आता, first of all they need to change that mindset. They need to really come out of it. They need to start internet. You have this blessed thing with in front of you. You've got to start there. There are plenty of things you can do right from your home. There are a lot of freelancing options. There is a lot of flexibility. You can basically work just a couple of hours a day and fulfill other responsibilities of yours as well. There are plenty of ways, guys, literally. But for that, you have to first of all change your mindset, say the positive affirmations that yes, you can do it, then actually make the action plan to do that. So you've got to, maybe make that plan on how you can increase the income source. You have got to invest more. अगर थोड़ा सा भी है, उसको भी आप invest करो, so that after X amount of years, there is something substantial in your bank account, right? You've got to learn basics of finance. थोड़ा बहुत आपको learn करना पड़ेगा. थोड़ा friend circle से बात करके learn that. So there are millions of options available, guys. You should never be saying that I don't have enough money. It's just that first of all, you've got to change that limiting belief for yourself. Change your mindset that yes, you can have enough money. Yes, you can buy whatever you want to because you are very capable. You've got to change your mindset first of all.
you've got to not let that hinder your growth. पहले माइंडसेट को चेंज करो और उसके बाद एक्शन प्लान बनाओ कि मैं ये सब कैसे करूँगा. क्योंकि सिर्फ एक्शन प्लान बनाओगे और आपका माइंडसेट अभी भी वैसा रहेगा, व्हाट विल हैपन इज, सिंस यू आर गिविंग दोज नेगेटिव सिग्नल्स टू योर माइंड, या तो माइंड आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी ग्रोथ की. अगर आपको मिलेगी भी, यू विल स्टिल बार बार उसी सिचुएशन पे आके आप लैंड करोगे. भले आपको 20-30,000 ज़्यादा की जॉब भी मिल गई है, आप फिर भी उसी सिचुएशन में रहेंगे कि आई डोंट हैव इनफ, मेरे पास तो कभी होता ही नहीं है. इवन दो यू हैव गॉट द सैलरी इंक्रीज, आपका माइंड अभी भी वैसा रहेगा. सो उसके बाद आपको सैलरी इंक्रीज भी एक पॉइंट के बाद नहीं होगी. सो इफ यू नो व्हाट आई मीन, दैट इज अ वेरी वेरी कॉमन लिमिटिंग बिलीफ दैट आई हैव सीन इन मेनी पीपल, दैट आई डोंट हैव इनफ मनी. Come out of that and basically learn a lot of skills available, monetize on those skills. There are plenty of skills you can do, guys. Literally, there is, just use internet. Don't use it just for social media, don't use it for just watching movies and YouTube videos, not like this but the other YouTube videos. But just make use of the time that you have got. Spend on yourself, invest on yourself so that you can invest in your future. It is very very important. So after changing the mindset, make the action plan and then actually execute that action plan. So that is the very first limiting belief, guys. Second limiting belief that I have heard a lot of people say is, what will others think? Log kya kahenge? वेरी वेरी कॉमन गाइज, वेरी कॉमन. लिमिटिंग बिलीफ हम में कैसे आते हैं? बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव हैड इन द पास्ट. भले इट वाज इन द चाइल्डहुड और व्हेन वी ग्रू अप, वट एवर एक्सपीरियंसेस वी हैव हैड इन द पास्ट, उसकी वजह से हमारे माइंड में ये बात बैठ गई है कि ये तो ऐसे ही है. सो अर्लियर अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल सीक्ड वैलिडेशन. कुछ भी खुद से करने से पहले दे यूज्ड टू टेक वैलिडेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. और अगर कुछ भी खुद से नहीं कर सकते थे बिकॉज दे यूज्ड टू थिंक यार लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे यार, वी कैन नॉट डू दिस, दैट पर्सन विल नॉट लाइक दिस पर्सन विल नॉट लाइक दिस. यू गॉट टू स्टॉप राइट देयर. दैट इज द लिमिटिंग बिलीफ दैट मोस्ट पीपल टिल डेट कैरी, कि लोग क्या कहेंगे. अभी many a times if you want to invest in yourself also, abhi matlab I can give a recent example. A friend of mine, she wanted to do this particular course which was very different from the career she is in, and she kept thinking कि यार लोग क्या कहेंगे, मेरे फैमिली क्या बोलेगी, मेरे relatives क्या बोलेंगे, if I change my career from X to Y, what will other people think. सो उसकी वजह से क्या हो रहा था, शी वॉज नॉट एबल टू परस्यू दैट करियर दैट शी वॉन्टेड टू एंड potentially could grow in that. So that is a limiting belief that she is carrying. That is a limiting belief many of us carry, कि कुछ भी हम अपनी लाइफ में डिसीजन लेने से पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे. We have to stop doing that. We have to believe in ourselves and do what we feel is right. Take calculated risks. ऐसे नहीं कुछ भी बस अंधाधुंध कर दिया, सोच लिया तो कर दिया. इतना भी carefree नहीं होना है. You can be carefree, but you should know what the repercussions are. Take informed decisions. Take calculated risks. अगर आप कुछ कर रहे हो करो, but inform yourself, educate yourself कि अगर मैं ये करूँगा तो इसके results क्या होंगे. Right? So it is good. I always encourage everybody to take some risks in their life, क्योंकि risk नहीं लेंगे तो you will be where you are. You will not be able to grow. So if you take risks, if you know what those are, if you're taking informed decisions, it will work out in your favor one way or the other. And even if it doesn't work out in your favor, so again example I'll give is कई लोग business start करते हैं, right? While working in corporate they start businesses. तो business भी start कर लिया, शुरू में अच्छा चला, then it failed. That's okay. You have got to move on from that and learn from that failure. क्योंकि कई लोग, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उस वजह से अपने माइंड में ये बात बिठा लेंगे कि बिजनेस तो मेरा है ही, मेरे बस की है ही नहीं, मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, आई कैन नॉट डू दिस. सो वो उनके माइंड में वो लिमिटिंग बिलीफ है. एंड वो कुछ भी नया ट्राई करने के लिए से पहले सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, यार रिश्तेदार बोलेंगे कि वो भी किया था, वो भी फेल हो गया, अभी ये करूंगा, ये भी फेल होगा, लोग क्या कहेंगे, राइट? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ऑल ऑफ दीज थॉट्स दैट वी हैव इन आवर माइंड, दे आर बेसिकली लिमिटिंग अस. Don't think about that. Believe in yourselves and take all those risks that you really need to take for your own personal growth. Now, the third most common limiting belief that I've heard people say is success is reserved for
privileged people. Literally many people think that कि I cannot be above middle class, I cannot be high class, मेरी तो फैमिली ऐसी है, मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा है, मैं आई कैनॉट डू दैट यार, कैसे कैसे होगा, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. पीपल थिंक कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, पता नहीं उनको कोई थॉर्न्स लगे हैं या वो पता नहीं क्या क्या करके सक्सेसफुल हो गए हैं. वेयर एज ऑल द सक्सेसफुल पीपल इन एनी वे, they have had their own share of hardships, right? तो उन्होंने अपनी हार्डशिप्स को ओवरकम करके, उन चैलेंजेस को ओवरकम करके, दे हैव अचीव्ड व्हाटएवर दे हैव अचीव्ड. एंड अदर पीपल हु एस्पायर टू बी लाइक देम, उनको मन तो करता है दैट दे ऑल्सो वांट टू बी एज सक्सेसफुल, मे बी इन अ पर्टिकुलर फील्ड और मे बी इन, इवन इफ दे आर वर्किंग इन प्राइवेट जॉब्स एज एन एम्प्लॉई, दे वांट टू रीच समवेयर, बट दे आर लाइक कि नहीं यार, मैं तो नहीं कर सकती, मैं कैसे बन जाऊंगा, मैं कैसे सीईओ बन सकती हूँ कंपनी की, हाउ कैन आई डू दैट. तो काफी लोगों को ये लगता है कि सक्सेस जो है रिजर्व्ड होती है सिर्फ कुछ लोगों के लिए. कहते हैं ना, कई बार बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा बहुत ब्राइट निकल जाता है कॉलेज या स्कूल से, तो बोलते हैं कि यार ये तो ना जीन्स ही होती हैं ऐसी, ऐसा मतलब हर कोई नहीं है, पढ़ाई तो सभी सेम ही करते हैं पर ये कुछ जेनेटिक है. दिस इज अ वेरी वेरी लिमिटिंग बिलीफ दैट मेनी पीपल होल्ड ऑन टू देमसेल्व्स कि they cannot be as successful as whoever they aspire to be. So instead of doing that, change your mindset to believe that yes, I can do this as well. Success is mine. So again, without taking any action, just changing your mind is not going to do anything. Change your mind first, change your thought process from I cannot do this and success is reserved only for special people. Change it to I can be successful. I am very much capable of doing that, whatever that particular thing is. I'm very much capable of doing this. I have done X thing in the past. I can do Y thing now. तो अपने माइंडसेट को वो पॉजिटिव सिग्नल्स दो, वो पॉजिटिव एफर्मेशंस दो अपने माइंडसेट को, उसके बाद एक्शन प्लान बना के अपने उन पे एक्शंस को एग्जीक्यूट करो. यू रियली नीड टू कम आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज लिमिटिंग बिलीव्स एंड देन reach wherever you want to reach. The fourth common limiting belief that many people hold on is it's too risky, right? ये काफ़ी कॉन्टेक्स्ट में बिजनेसेस जो लोग करना चाहते हैं बट वो लोग नहीं करते हैं, just because they feel it's too risky. I am not going to do that. और it's also valid जब लोग करियर चेंज करना चाहते हैं, right? So they think कि यार ठीक है, अभी तो मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ IT में, if I don't want to do this, I want to do, I don't know, be a professional singer, they would be like it's too risky, ये नहीं कर सकता हूँ मैं, या ये नहीं कर सकती हूँ मैं. So that is a very very limiting belief that people need to let go of. Instead of that, they need to say I can do this and I will educate myself and take the calculated risk. I spoke about this in earlier limiting belief as well, but same holds true here as well. Nothing is risky. You have just got to know what the repercussions of those risks are. You've got to take the calculated risks, and then nothing is risky, nothing is impossible. If you want to change your career from X to Y, yes, you can change that. क्योंकि जो अभी प्रोफेशनल सिंगर्स हैं वो भी तो कहीं से तो स्टार्ट हुए ही थे ना. नॉट एवरीबडी इज फ्रॉम अ सिंगिंग बैकग्राउंड, कुछ तो नॉन सिंगिंग बैकग्राउंड से ही, कुछ क्या मैक्सिमम नॉन सिंगिंग बैकग्राउंड से ही गए हैं, प्रोफेशनल सिंगर्स बने हैं, राइट? सो यू कैन ऑल्सो डू इट, बट यू नीड टू सी, यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ कि क्या स्टेप्स हैं, मुझे क्या क्या पहले अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो हाउ डू आई मेक यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई डू. तो वो प्रॉपर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी. प्लानिंग करने के बाद आपको हर एक स्टेप पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. तो ये पूरा गोल सेटिंग का प्रोसेस आपको करना पड़ेगा. बिफोर द डूइंग ऑल ऑफ दैट, चेंज योर माइंडसेट. Nothing is risky. Everything is possible. I know what to do. I am very smart. If anyone can do it, it's me. You've got to say all these positive affirmations. Train your mind that yes, I can do this, and then you will see beautiful results. All right. Now, the last and the fifth limiting belief, common limiting belief that I have heard from people is I'm afraid of failure. Again, something tied to all the things that I'm saying. Many people say कि आई डोंट वॉन्ट टू फेल. करियर चेंज की सिचुएशन में बहुत एप्ट बैठता है. मैं सिंगिंग लाइन में नहीं जाना चाहता यार, व्हाट इफ आई फेल, मेरी ये वाली जॉब भी जाएगी एंड वो भी नहीं मिलेगा, हाउ विल आई अर्न, व्हाट विल आई डू एंड ऑल ऑफ दैट. सो वो दैट लिमिटिंग बिलीफ इज बेसिकली होल्डिंग यू बैक फ्रॉम इवन ट्राइंग. आप लोग उस फेयर ऑफ फेलियर की वजह से ट्राई भी नहीं करते हो. समथिंग दैट आई सेड बिफोर, लोग क्या कहेंगे,
कि आप फेल हो गए, लोग क्या कहेंगे, हाँ इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी, अभी ये कर रहे हैं, अब धक्के खा रहे हैं, ये हमें तो पहले ही पता था ऐसा होगा, राइट? वी all of these limiting beliefs are also tied to each other, because as an individual, as a human beings, these are all the thoughts which are intertwined, और एक के साथ साथ दूसरा भी आता है. So that fear of failure is again a very common limiting belief that most people have. So again, for this as well, first of all, change your mindset. I will not fail, I will succeed. अब फेलियर की और सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है. व्हाट इज योर सक्सेस, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ फेलियर? सक्सेस को आपने इतना बड़ा सक्सेसफुल वो नहीं बना देना कि मैं इंडियन आइडल में ही गाने लग जाऊं, आज सोचा और मैं कल इंडियन आइडल में गाने लग जाऊं. नो, success definition can be even the small successes that you do every day. Record one video, that is a success for you. You know, take the coaching, go to coaching every day, or go to coaching x times, x days a week, something like that. So आप अपनी success को छोटी छोटी, make those smaller goals and have success associated with all of those. So you will feel I have 10 successes as opposed to that one success जो कि बहुत ही distant dream है. वो 10 successes is basically a pathway for you to reach wherever you want to reach. So come out of that fear of failure, let go of all these limiting beliefs. For the 5 limiting beliefs that I spoke about today are: I don't have enough money, what will people say or what will others think, success is reserved for special people, it's too risky, I am afraid of failure. So you have got to really let go of these limiting beliefs, because if you want to transform your life, if you want to change it, if you want to lead a life that you really want to, because you have seen someone else do it, you've got to let go of these limiting beliefs. I cannot emphasize it more. You have got to let go of these limiting beliefs. You've got to signal your brain for those positive signals. You have got to, first of all, believe in yourself. Believe in yourself. ऐसे ही नहीं बोली जाती हैं ये lines. It actually means something. Only if you believe in yourself will someone else do. So believe in yourself and let go of all of these limiting beliefs. Make an action plan and execute on that action plan. Take calculated risks, but do take risks. I am highly in favor of that. So with that, I'm going to wrap up today's video. I hope today's video and the last video gives you a very good context into what limiting beliefs are you carrying within yourselves. Do let me know via comments below on what are the limiting beliefs that you have, or if you carry any one of the ones, any one of these that I mentioned today. Until then, I'm going to see you all next week. Bye bye.